Okay, Ishfaq, you are requested to unmute yourself. Yeah, yes, sir. Okay, so you were talking about the Nobel Prize. So, Ishfaq, who is considered the founder of Nobel Prize? There's a story behind the very, the foundation of Nobel Prize and the person who started this Nobel process and all the things. So, what is that story? What is the name of that person who started this Yes, who took the initiative? yes, sir. Sir, he was a Swedish scientist whose name was Alfred Nobel, and whose very discovery was dynamite. Who discovered dynamite, and because of that discovery, he became quite rich. So when he died, so he wrote a will in that he gave them advice to grant that money to the people who are working in different fields. So basically, there were 5 fields. In those 5 fields, Nobel Prize. The story was in 1900. the story was a bit different actually, like a newspaper published. Yes, actually. Yes, and there is a statement that I think I've forgotten the statement, but I knew it. It's not in my mind right now. Okay, the merchant of perhaps death is no more, the story and all the things were there. Okay, so who won Nobel? The merchant of death is dead now. Okay, 2022 Nobel Prize winner. What is the name of that person in literature? I'm talking about. Yes, sir. She is a French writer. Her name is Annie Ernaux. Oh, yeah. She writes autobiographies basically, and her work is autobiographical. And she won Nobel Prize for what? She, I don't know, sir. I don't know the exact work. Okay. So, do you know who is the poet laureate of England? Sorry, sir. I don't know. Okay. Basically, she won the Nobel Prize for the courage and the clinical acuity. And maybe you need to bring some details about the poet laureate, who is Simon Armitage. So these are the 2 basic things. Okay, last 3 questions. What is the name of your favorite poet, Ishfaq? So Robert Frost is my favorite poet. Okay. Any writer from Pakistan who's your favorite one? I have gone through the work of Mohsen Hamid. Okay. Yes. And Bapsi Sidhwa's Ice Candy Man. Okay. So Robert Frost, any poem of Robert Frost that you can recite? Sir, I can recite some of the lines from 2 or 3 poems, but not entire poem. If you allow me to recite, as Road Not Taken, and another is from Mending Wall. Some of the quotations that I know. Okay, let's talk about Mending Wall. What is the significance of the title of this poem, The Mending Wall? What Robert Frost is talking about? Here he is talking about is in one of the lines he says that good fences make good neighbors. So the very reason is to establish we can say some boundaries. Is that has been a primitive urge of human society to demarcate their boundaries and their territories. Whenever it is disturbed, it is destroyed through natural causes or any other causes, then they again come up with creating those boundaries so as to signify their place, their property, their land. Okay. Oh yes, spring is a mischief in me. I wonder if I could put a notion in his head. Why do they make good neighbors? Isn't it where there are cause, but here there are no cause? He only says good fancies make good neighbors. Okay, and why Robert Frost? What do you feel? Why Robert Frost is different than others? Why not other poets? There are a lot many other poets. Then why Robert Frost? Yes, there are a lot many other poets. I also have read some of them. But when I read his poetry, especially Road Not Taken, there he talks about choices. So from that very famous poem, I got inspired, and his language is quite simple.
and he talks about rural life, and I also belong to rural areas. So somehow there is, I can say, some connectivity with Robert Frost and the environment that I'm living, and the choices that I have to make. So everyone has to make certain choices. So in that way, Robert Frost is a Nobel laureate. No, sir, he's Robert not. Frost is a Nobel laureate. No, sir, he's not a Nobel laureate, but he won 4 Pulitzer Prizes 4 times. But he had that obsession to win Nobel Prize, but he could not win Nobel Prize. Yeah, he could not actually. I think he was nominated for more than 30 times. He was nominated for it, but could not get Nobel Prize. So Frost been the poet laureate of any country? Sir, he is not poet laureate of any country, but state, Vermont, state of Vermont, he is poet laureate of that. He was. Oh, yes. So state of Vermont is there in New England. So New England is situated in which country? Sir, it is basically the first 13 states of America. They are considered as New England. They were first colonized. Oh, yes. And the state of Massachusetts, that is, you know, the next state of Vermont, is a very famous one. By the way, what is the story between the Vermont and the Massachusetts that is quite close to this state? You know, when we are talking about the slaves and the slavery was there, there's a very famous story that is associated to this state. By the way, whenever we talk about South in American history, what comes in your mind? South is famous for one thing. What is that? South is famous for, sorry, sir, I'm unable to recall. Okay. You need to try to find out the answer of this question, because definitely what is the difference between the South and the North? You will definitely explore a lot many dimensions. So why the settlers, they were preferring to settle there. So I'm sure that you will get the answer. The last question is, we have PDM in Pakistan. So what do you mean by PDM, and how many total parties are there in PDM right now? So that is Pakistan Democratic Alliance, and there are, I don't know the exact number of the parties, but PML known, PP, Pakistan People's Party, and Jamaat Ulama Islami, and Awami National Party. When it was founded, any details about the foundation when it was founded? No, sir, I don't know the exact detail when it was founded. Who is the president of this party? I think I can make a rough guess, but I'm not sure. I think Maulana Fazlur Rahman. Oh yeah, your guess is like as good as mine. Maulana Fazlur Rahman is there. And talking about the total parties, yes, there are a lot many parties, but the most famous one, if we can talk about, BAP, MQM, NDM, and ANP, like almost all the parties, they gathered against the then Prime Minister, who was the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, and it was founded somewhere in September. So yes, then like initially it was founded in September, and it was a movement then, but later on, definitely they succeeded to offset the Imran Khan on the 10th of April 2022. So a sort of success is there. But PDM, yes, the having just a single ideology that they are the against Pakistan Tehreek-e-Insaf. So maybe you need to browse the details about the PDM and why PDM was there, because definitely it is a very important question. Okay, yes, Sajjad has tried to answer the question. He's from Chin, and yes, slavery was dominated in southern state and it was agriculture. Yes, very good, Sajjad. Yes, it is the reason. And I'm sure that, inshallah, Ishfaq will also browse all the details. So thank you so much, Ishfaq. Overall, it was a wonderful interview, and I can only rate out of 100, you know, the percentage, basically. Your communications, your confidence, all the things, mashallah, they're very good, and you know how to handle your interview, you know how to answer all the questions, you know where to take the stops, you know where to boom your interview, where you want to take the interview in your own control. So maximum things are there. The only recommendation for you is that you need to revisit the American history. You need to watch some movies based on the American history, and you need to read the details, like about the South, about the North, about the states of America.
And the last thing is that your GK is not as good as your grip on literature is. So maybe you need to give attention to the general knowledge as well. Okay. Overall, it was a wonderful interview. And if I am there in the section where I'm going to evaluate you, you will be somewhere around 280 marks. Okay. So that is the score that I can give you out of 100. All right, Ishaq. All right, it was a wonderful interview. Thank you, sir. Thank you very much. If there is any And question, sir, you may go on sir, with the question. the areas that Mm-hmm. you are recommending that I should improve are general knowledge and other, so that Yeah. I can work on them. Because Mm-hmm. on a lighter note, if I say that is a do or die situation for me, because I've been trying since 7 or 8 years. Mm-hmm. Because I've appeared in 5 or 6 interviews, but Mm-hmm. have been unallocated for many a time. So that is the reason I want to crack it, and I've been working day in and day and night in a way. So Mm-hmm. I am quite serious about it. And what are the areas that I should work in terms of communication or in terms of confidence or anything that I should improve? Because general knowledge, what I think, I have also been teaching general knowledge for the preparation of these classes, for preparatory classes for various jobs. So as far as GK is concerned, I think I can improve it. GK as far as current affairs is concerned, because I prefer when my interview is to be conducted, when schedule is announced, then I can work on these current affair issues. We have to Okay. remember these things for a My short period of recommendation time. is that you need to work on your American history now, like history of United States. Maybe you need to revisit some details about the America, about the history, the literature, the early years of the Republic, and then the Revolution and the independence and their impact on the literature. Maybe you need to understand what was the role of growth and industrialization on literature, and what we mean when we talk about war, prosperity, and depression. So Cold War and the effect on the literature. So all these things should be there on your fingertips, because you are not an ordinary case. You need to work, and you are supposed to be there, inshallah, in the top of the list. Thank you very much, sir. Inshallah. Inshallah, you will be there. Thank you so much, Ishfaq. You're requested to mute yourself. Okay, the next participant we have with us is Miss Fatima. If we have Miss Fatima with us, Miss Fatima is requested to unmute herself. In case we did not receive anything from Miss Fatima, we are going to consume our rest of the 6 to 7 minutes in literary terms. So if Miss Fatima is with us, Miss Fatima is requested to write yes in the chat box. Otherwise, we are going to move further. Okay, so Miss Fatima is not there. I am assuming. Respected participants, yesterday we were trying to understand some important literary terms. Let me clear this drawing and let me redraw the things for you. Okay, the first of all, I'm giving you some, once again, literary terms that you're supposed to search and prepare at your own. The first one is novel. That is quite easy, but you are not supposed to ignore the very definition of the novel. Then novella is there. Then at number 3, we have novel of manners. Then we have at number 4, octave. Then we have at number 5. I have read your question, Alina. I will explain high modernism right after the class in a voice note in your group. Okay? I'm going to answer your question. But let me complete all the terms. Otherwise, we are going to ignore some important questions. So octave, odd is there. Number 6. We have onomatopoeia. I'm sure that the very famous term is there already on your fingertips. Onomatopoeia. Okay, EIA. Okay, then at number 7, we have oxymoron. This question been there in a lot many interviews. And then parable is there. And then we have parody. After parody, we have persona.
And then we have pastourship, PSTICHE, and then we have pathos. After pathos, the very common term is there, that is personification. And then we have plot, apparently very easy, but थोड़ा सा different. आज एक student जो है वो उनका message receive हुआ, उन्होंने कहा कि सर आप किस पैनल में होंगे. So I told her कि these are the confidential details, तो मैं तो नहीं आपके साथ शेयर कर सकता until unless जो है वो ये इंतहाई इनएविटेबल हो. तो उन्होंने कहा कि सर मेरी दुआ है आप मेरे पैनल में ना हो, आप बड़े ओखे सवाल पूछते हैं. So मैंने काफी स्टेटमेंट को एंजॉय किया. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या वाकई ऐसा है. तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि आसान क्वेश्चन पूछें. उन्होंने कहा सर आप बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं. और इन एक्चुअल इंटरव्यू वी ऑलवेज ट्राई लाइक वी एम टॉकिंग अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स स्पेसिस्ट एज वेल, कि हम जो है वो कोशिश करते हैं अकोमोडेट करने की. उन्होंने कहा कि सर आप मेरे इंटरव्यू में ना हो, आप बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं. तो एक्चुअल इंटरव्यू में स्टोरी कुछ और होती है. मैं यहाँ पे एक ये भी चीज क्लियर कर दूं कि जब एक्चुअल इंटरव्यू में हम किसी स्टूडेंट को देखते हैं ना कि वो रुक रहा होता है, वो बात कुछ बताना चाह रहा होता है, तो उन्हें खुद भी कोशिश करते हैं कि वर्ड्स देने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने जैसे इशफाक साहब ने भी गेस किया था कि आई थिंक इट्स फजलुर रहमान, सो आई सेड कि योर गेस इज एज गुड एज माइन. तो इट मीन्स कि अल्टीमेटली बता दिया कि आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपका गेस जो है वो बिल्कुल ठीक था. सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अगर कहीं पे भी इनकाउंटर हो भी जाता है कहीं किसी जगह पे, तो क्वेश्चंस हमेशा जब भी होते हैं वो ईज़ी होते हैं और उनकी कोशिश किया जाता है कि आपके लेवल पे ही आके पूछा जाए या उस लेवल पे लेके आया जाए. एक डोमेन में जब स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चंस ड्रॉप करता है ना, तो जो आपका इंटरव्यूअर है वो भी उसमें से निकल जाता है. वो फ़ील करता है कि मुझे यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये जो एस्पिरेंट है यहाँ पे कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा. बट दैट डज़न्ट मीन कि एस्पिरेंट बिल्कुल भी प्रिपरेशन ना करें. अच्छा जी, लेकिन ये है कि मॉक सेशंस आपको काफ़ी जो हैं वो बूस्टर दे देते हैं. आपको पता चल जाता है कि आपको ढंग से प्रिपेयर करना होता है. और जो क्वेश्चंस फिर यहाँ पे पूछे जा रहे होते हैं बाकी भी जो हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिस्ट भी जो दोस्त पूछ रहे होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, तो तकरीबन सेम इसलिए भी हो जाते हैं कि इंसान है, डेफिनेटली उसके क्वेश्चंस रिपीट तो होते ही हैं अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं पे. तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपने देखे होंगे कि जो क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज में चल रहे होते हैं तकरीबन इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस या इसके करीब क्वेश्चंस ही आपसे एक्चुअल इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, जो बाकी जो हैं वो मेंटोर भी पूछ रहे होते हैं आपसे एक्चुअल इंटरव्यू में. सो आप इनको जरा ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा. 16 नंबर पे हमारे पास है जी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन वी हैव number 17 we have pop art, and then we have post colonial literature, and then पोस्ट colonial लिटरेचर जो है वो एक ऐसी लिटरेचर जो कि लैंग्वेज उनकी लिखा जाता है जो कि फॉर्मर कॉलोनियलाइजर्स होते हैं. ठीक है, उन्होंने आके जिस तरह से हम इंग्लिश में लिखते हैं. ठीक है, सो ग्रेट ब्रिटेन के जो हैं वो हम कॉलोनियलाइजर्स जो हैं वो हमारे उन्होंने हमें जो है वो लिखा रखा, कॉलोनियलाइजर रखा. अब जब हम उनकी लिख रहे हैं लैंग्वेज के अंदर, तो इसका मतलब है इट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. अगली टर्म है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म. अच्छा जी, that is basically the branch of literary criticism, and its focus is on seeing the literature and experience the people of former colonies in the context of their own culture. So जब आप ये देखते हैं या उनको perspectives में देखने की कोशिश करते हैं कि जिस टाइम पे वो रहे थे उन्होंने क्या उनका एक्सपीरियंस रहा था अपने लोगों के साथ, अपने कल्चर्स के साथ. So branch of literary criticism whose focus is on seeing the literature and experience of the peoples of former colonies in the context of their own culture. ओके, सो इस तरह से दो तरह से कंपैरिजन हो सकता है कि एक या तो आप उनका अपने कल्चर के साथ मुआवजा कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो एज अपोज टू सेइंग देम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोपियन लिटरेचर.
तो आपने पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म एक पूरी की पूरी ब्रांच है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि 1 मिनट में मैं इसको सम अप कर दूं, बट आप इसकी डिटेल्स जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो है वो कल्चर्स का जो है उनका कंपैरिजन हो रहा होता है, और लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है कल्चर्स के अंदर जो है वो। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव पोस्ट मॉडर्न। Postmodernism and post-structuralism. Okay, so these are the terms that you are supposed to explore for today. And talking about the postmodernism, as I have mentioned earlier, that the postmodernism means like after Second World War, like after the modernist era, ज़्यादा स्पेसिफिकली बात कर लें तो 1945 के बाद जो है और 1980 के करीब करीब एक स्पेसिफिक स्टडी हमारे पास इमर्ज होती है, जो कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के अंदर इमर्ज होती है, इंग्लिश में भी इमर्ज होती है और बाकियों के अंदर भी इमर्ज होती है, जो कि ट्रेडिशन से बिल्कुल ब्रेक चाहती हैं और एक नई चीज़ को फॉलो अप करना चाहती हैं, एक नई चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। ठीक है, दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। सो इसी तरह से हमारे पास जो है स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जिस तरह से स्ट्रक्चरलिज्म है वो रिलेशनशिप के ऊपर बात करती है, लैंग्वेज और रियलिटी के ऊपर, और इसी तरह से वो देखती है कि कैसे जो है हमारी रियलिटी जो है उसको सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक डिटेल्स। अगर आपका इनके बारे में कुछ क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर आपका जो है एक और क्वेश्चन था वो क्वेश्चन रीपोस्ट कर दीजिएगा। जिन्होंने आई थिंक हाई मॉडर्निज्म के बारे में किसी ने पूछा था, सो हाई मॉडर्निज्म हमारे पास, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1920 की एक मूवमेंट है। ये समझा जाता है मॉडर्निस्ट लिटरेचर जब अपने पीक पे था, जब अपने पीक के ऊपर बिल्कुल था, उसको कहा जाता है हाई मॉडर्निज्म। ये वो पीरियड था कि जिसके अंदर हमारे पास जेम्स जॉयस की पब्लिकेशंस हैं। ये वो पीरियड है जिसके अंदर हमें जेम्स जॉयस का यूलिसिस मिला, जिसके अंदर टीएस इलियट का वेस्टलैंड मिला, गो के टीएस इलियट को बाद में इसमें शामिल किया गया। बट इसी एज में हमें वर्जीनिया वुल्फ मिलती हैं, उनका मिसेस डेलोविज मिलता है, और इसी एज के अंदर बाकी राइटर्स जो हैं वो जो लिखने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस तरह से जेम्स जॉयस पढ़ लीजिए मुख्तलिफ है, वेस्टलैंड वर्जीनिया वुल्फ है, जो दूसरों से हट के लिखते हैं, नई नई टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, ऐसी टेक्निक जो इससे पहले कभी भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। Sir, is there any difference between the post-structuralism and post-structuralism with hyphen and without hyphen? अच्छा, मुझे इसके अंदर जो है गो के बहुत से लोग मानते हैं कि कोई डिफरेंस है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क ना तो लगा है, और ना ही इस फ़र्क को मैंने कभी इतना डिटेल से कि इसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर पढ़ने की कोशिश की है राइमा। जब भी किसी भी चीज़ को इतनी माइन्यूटली देखने की कोशिश करें तो उसके लिए फिर सबसे अच्छे रेफरेंसेस रिसर्च पेपर्स होते हैं। तो अभी मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के आंसर अभी मेरे अपने ज़हन में नहीं है। शायद फ़र्क एग्ज़िस्ट करता हो, शायद ना करता हो, बट मुझे, चूँकि मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लोर इसलिए नहीं किया कि मैं सब इन दोनों को मैं समझता हूँ कि सिनोनिम्स हैं, और 2-3 जस्टिफिकेशंस हैं मेरे पास जिन राइटर्स को मैं बेस बना के कहता हूँ। सो अभी शायद मैं इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाऊँ। ठीक है। नहीं जी, मैरी शेली जो हैं और मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट जो हैं, ये तो उसकी मदर थी ना, मैरी शेली जो हैं। वो एक तो जो हैं हमारे पास पीबी शेली की मिसेज़ हैं, तो एक जो है वो उनकी मदर हैं जो हैं, ये सेम नहीं है। आप इनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। जो मैरी शेली की जो हैं ये पीबी शेली की वाइफ हैं, और वॉल्सटोनक्राफ्ट जो हैं ये हमारे पास एक और राइटर हैं, द विंडिकेशन ऑफ द वुमन राइट शायद इन्होंने लिखा था। ठीक है जी? हाँ, विलियम गॉडविन की जो है वो, ठीक है। हाँ जी, पीबी शेली गए थे उनके घर पढ़ने के लिए, तो उन्होंने जो है वो वहाँ से मैरी शेली जो है वो उनके साथ मोहब्बत कर ली। ऐसा नहीं था कि उनकी जो है वो पहली मोहब्बत थी पीबी शेली साहब की। वो लॉर्ड बायरन के असल में नक्शे कदम पे चला करते थे और लॉर्ड बायरन से काफ़ी मुतासिर थे। तो शेली ने इससे पहले भी उनकी शादी हुई हुई थी ऑलरेडी ना। तो बाकी की कहानी जो है वो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और उनकी पहली मिसेज़ जो है वो पीबी शेली की, उनकी फिर डेथ हुई थी। फिर अल्टीमेटली जब पीबी शेली जो हैं वो यहाँ पे आए इनके पास जो हैं, तो बाद में इनके साथ भी कुछ मुख्तलिफ
नहीं हुआ, इनकी अपनी भी जो है वो डेथ हो गई थी। सो हमारे पास जो है वो काफ़ी डिटेल्स हैं, बट इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको, इनकी डिटेल्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। 2 इनकी जो है वो स्पाउसेस रही थी, हैरियट थी, हैरियट वेस्टब्रूक हैं, उनसे शायद 1811 में इनकी शादी हुई थी, लेकिन वो 1816 में जो है वो उनकी डेथ हुई थी। डेथ हुई थी तो फिर इसने मैरी शेली के साथ शादी की थी, ठीक है। तो ये डिटेल्स जो है वो इनकी एक्सप्लोर कर लीजिए। देखिए, एक तो बिल्कुल ही अलीना जो है वो, जब आप मॉडर्निज्म की है ना, मॉडर्निज्म की मूवमेंट देखिए कि उसके तो पॉइनियर हैं आपके पास टीएस इलियट और एजरा पॉन्ड जो है वो। हाई मॉडर्निज्म एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें आपके पास जेम्स जॉयस आते हैं, जिसमें आपके पास वर्जीनिया वुल्फ आ जाती हैं। तो एक ऐसी मूवमेंट है। मॉडर्निज्म जो है वो तो हमारे पास खत्म हो जाती है ना शायद कोई 1940 के करीब जो है, और ये अगर हम कहें, लेकिन वो मॉडर्निज्म शुरू होती है 1890 के करीब करीब जो है वो, ये शुरू होती है 1920 के करीब करीब, और ये वहां से शुरू होकर अभी तक चल रही है, जबकि मॉडर्निज्म खत्म हो गई है। पहला तो ये डिफरेंस है। दूसरा, मॉडर्निज्म ने भी रेडिकल ब्रेक दिया था ट्रेडिशनल राइटिंग स्टाइल से, लेकिन जो जो हाई मॉडर्निज्म है, इनका जो ब्रेक था वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, ठीक है। इनकी जो पब्लिकेशन थी वो दूसरों से बिल्कुल हटके थी। ये बात करते थे थॉट की, रिलीजन की, सोशल कन्वेंशंस की और मोरालिटी की। इस एज के जो थीम थे वो एक इस सॉर्ट ऑफ अटैक होते थे हायरार्की के ऊपर, जो इससे पहले नैरेटिव टेक्निक्स होती थी उस तरह से। इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया, इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें दी, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स दिए, मोड्स ऑफ थिंकिंग इनके डिफरेंट थे, इनका रेफरेंस देने का, सेल्फ रेफरेंसेस जो है वो मुख्तलिफ होते थे। तो इनका जो ड्राइंग अटेंशन ड्रॉ करने का अंदाज था वो मुख्तलिफ था। सो इनका फॉर्म और कंटेंट जो है वो मॉडर्निज्म से कदरे मुख्तलिफ। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड द मैक्सिमम क्वेश्चंस। अगर कोई और क्वेश्चन है तो उससे पूछा जा सकता है, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और सुबह जो है हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू नेक्स्ट वीक में है, मुझे काइंडली उनका नेम कंफर्म कीजिएगा कि जिनका इंटरव्यू जो है अपकमिंग वीक के अंदर आ रहा है। जिनके इंटरव्यूज अपकमिंग वीक के अंदर हैं, काइंडली वो अपना नेम मेंशन कर दें। अगले वीक में किसी का इंटरव्यू प्लान्ड है, पीपीएससी के साथ किसी का इंटरव्यू है अगले वीक में, सोबिया का 20 को। वैसे तो हमें श्योर है कि 20 से ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है, ठीक है, आपका अगले वीक में आ रहा है ना, सोबिया का आ रहा है। और अच्छा, ये जिन पार्टिसिपेंट्स का इंटरव्यू नेक्स्ट वीक में है वो काइंडली अपना नेम जो है वो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, जो मैंने आपकी आसानी के लिए चैट बॉक्स में लिख दिया है, ताकि आपका इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल कर दिया जाए, ठीक है। इट इज़ माय पर्सनल नंबर, जिसपे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बहुत ब्रीफ रह के, बहुत मुख्तसर रह के सिर्फ क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा, उसमें आपको वेट करना पड़ सकता है कोई थोड़ा सा, लाइक कम से कम कोई 6-7 घंटे तो वेट कर ही लीजिएगा। तो मैं उसको आंसर जरूर कर दूंगा, ठीक है, लेकिन उसमें मुझे ये डिटेल्स दे दीजिएगा। और कोई अर्जेंट क्वेश्चन हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, बट उसमें एक दफा मैसेज ये जरूर लीव कर दीजिएगा कि इट इज समथिंग अर्जेंट, ताकि उसको जो है वो मैनेज कर लिया जाए। टिल व्हेन वी कैन वी एक्सपेक्ट इंटरव्यूज? इफ़त साहिबा, आप अपने इंटरव्यूज जो हैं वो एक्सपेक्ट कीजिए कि आप जो हैं 20 से ऑनवर्ड्स, और मैक्सिमम जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर तक आपके पास आपके स्केड्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए और दिन रात एक कर लीजिए। एक चीज, आखिरी चीज, और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी की जीत होती है। जीत उसकी होती है जो मुसलसल लगा रहता है, ठीक है। ये जो कभी रुक जाना, कभी मेहनत कर लेना, कभी ना करना, ऐसे नहीं। एक गोल है, एक मकसद है, दिन रात सोते उठते जागते जो है वो उसी पे फोकस करें, एंड इंशाल्लाह Almighty Lord of Heavens is not going to disappoint us. So जी, thank you so much with this note. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. Hope to see all of you inshallah in tomorrow's class. Till then, take care. खुदा हाफिज.